India was ready to prove its scientific strength to the world. A secret mission, hidden from global eyes, began in the deserts of Pokhran, Rajasthan. This was not just a test of nuclear power, but a test of courage, unity and sacrifice. देश की सुरक्षा के लिए हमको एक मजबूत कदम उठाना होगा, न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सीक्रेसी। पूरी दुनिया की नजरें हम पर है। Satellites from other nations continuously monitor Pokhran. We will need extreme security and dispatches. हम ये कर सकते हैं। We must trust our scientists and our soldiers. This test will shape India's future. मैं आप सब पर पूरा विश्वास करता हूँ। भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। टीम ध्यान रहे, कोई भी बाहर के दुनिया को हमारे ऑपरेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सर, foreign spy satellites will scan the area within 5 minutes. Everyone, hide equipment under camouflage net. Move fast. Sandstorm cover is coming. It's our chance. Machines ready. Measurement stable. Waiting for final command. काफी दिन तक टीम ने बिना घने काम किया। 50 डिग्री डिजर्ट थी, लिमिटेड रिसोर्सेस, सैटेलाइट सर्वेलेंस, बट उनका हौसला नहीं टूटा। मेरी बेटी का बर्थडे था, but I stayed here because this mission is for all our children, for India's future. हमारी जान भी चले जाए पर मिशन सक्सेसफुल होगा। This is the moment. Dr. Kalam, Operation Shakti, fire. Countdown begins. 5, 4, 3, 2, 1. India has become a nuclear power today. The world is shocked. Bharat has shown its strength and dignity. हम शांति के पक्षी हैं, लेकिन शक्ति भी रखते हैं। This is the power of Indian science, not for war, but for peace. हम शक्ति भी है, शांति भी है। यह नया भारत। जय हिंद। पोखरण का परिणाम सिर्फ एक न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं था, वो था भारत के सपनों का अभियान। आफ्टर पोखरण, इंडिया was ready to fly high,
towards missile power. सर पोखरान सक्सेसफुल रहा, अब भारत को मिसाइल सिस्टम की जरूरत है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा खुद कर सकते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो हमें सोने ना दे। नाउ इंडिया विल बिल्ड इट्स ओन मिसाइल फैमिली। द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज आवर स्ट्रेंथ। The year was 1988. Under the leadership of great scientists and visionaries, India successfully tested its first indigenously developed ballistic missile, Prithvi. This historic moment marked the beginning of India's self-reliance in defense technology. मैं हूँ पृथ्वी, भारत की पहली मिसाइल, शॉर्ट रेंज, पावरफुल और देश की पहली सुरक्षा रेखा। In the year 1989, India successfully tested another powerful missile named Agni. Later, Agni 1 in 2002, Agni 2 in 1999, Agni 3 in 2006, and the mighty Agni 5 in 2012 further strengthened India's defense forces. मैं हूँ अग्नि, symbol of fire and strength, long range ballistic missile, ready to defend the nation. In the 1990s, India developed the Trishul missile for short-range defense against enemy attacks. In the year 2014, Akash missile was officially inducted into the Indian Armed Forces to protect our skies. I am त्रिशूल मिसाइल। मैं हूँ आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो आसमान से आने वाले हमलों को रोक सकता हूँ। In the year 2001, India created history by introducing one of the fastest cruise missiles in the world, BrahMos. BrahMos can be launched from land, sea and air, making it one of the most powerful defense weapons in the world. और मैं हूँ ब्रह्मोस, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, मेड विथ इंडिया रशिया कोलैबोरेशन। In 2008, India tested Sagarika, a missile that could be launched from deep under the sea. In 2017, India successfully tested Nirbhay, a long-range cruise missile whose name itself means fearless. मैं हूँ सागरिका मिसाइल, भारत किसान दुश्मन को दूर से ही जवाब देती हूँ। मैं हूँ निर्भया मिसाइल, भारत की स्वदेशी शक्ति जो लंबे फासले तक निशाना साधकर देश की सुरक्षा करती हूँ। World is shocked.
India's missile power has grown rapidly. India is now a strong and self-reliant nation. Born in the year 1931, Dr. APJ Abdul Kalam dedicated his life to science and service to the nation. He served as the President of India from 2002 to 2007 and is remembered as the Missile Man of India. Dr. APJ Abdul Kalam, you gave us confidence to believe in ourselves. You showed us no dream is too big if our goal is pure. You taught us that knowledge is the greatest power. You will forever live in the hearts of millions of Indians. From 1988 till today, India has grown from its first missile to becoming one of the strongest defense nations in the world. This proud journey continues through the hands of young students like you. Today, we learn from our history. Tomorrow, we will create new history. We watch powerful missiles on stage. Tomorrow, we may design and build them for our nation.